Right, so we are now beginning with our stream over here. Jai Hind, everyone. Welcome to the summit. So, starting from 14th August and moving forward to the 15th of August, we'll be organizing the Command Defense Exam Summit onto Unacademy platform. Now, this is one of the biggest defense summits that is being organized in the country, and Unacademy is proud to present it to you. Now, before we move any further, is there any problem anybody is facing with the audio or the video of this summit? एंड आई बी एक्सप्लेनिंग टू यू हाउ कैन यू यूज़ दिस समिट एट बेस्ट. कैसे आप इससे सवाल पूछ सकते हो, वो सवाल जो शायद आपको रूटीन लाइफ में हम एजुकेटर्स नहीं बता पाते हैं, या फिर कई सवाल जो ऐसे रहते हैं एज ए एस्पायरेंट जो आपके दिमाग में रहते हैं जिनको आप कभी क्लैरिफाई नहीं कर पाते हो. दिस समिट इज़ वन प्लेस जहाँ पे आप इन सारे क्वेश्चंस को अपने आंसर करवा सकते हो. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द समिट विच इज़ अनअकैडमी कमांड डिफेंस एग्जाम समिट. इसी तरह से हम लोगों ने प्रीवियसली सिविल सर्विसेज का समिट किया था एंड इट वाज इंडीड अ ग्रेट सक्सेस. I hope this summit also becomes the similar success and you are able to ask any questions that you want to. Now, before I move any further, my name is Surya Pratap Singh and I am one of the top educators on Unacademy platform. To those who don't know me, बाकी जिन लोगों को मेरे बारे में पता है सबका स्वागत है, जिन्हें नहीं पता है उनका भी स्वागत है, and a warm welcome to you to this summit. The summit is being organized in association with the Hindu group by Unacademy for your welfare. So make the most of it. Let's begin our session by understanding who all are coming over here and why do we call it as the biggest defense summit. सबसे पहली चीज़ यहाँ पे यही पता लगती है कि himself, Shri M. Hamid Ansari is going to be a part of it, who has been the Vice President of this country. Then there are going to be dignitaries like Lieutenant General Vinod Vashisht, AVSM, VSM and BAR. Also Captain Yashika Hatwal Tyagi is going to be there, Major DP Singh is going to be there, General HS Panak, PVSM, AVSM, General VP Malik, a PVSM, AVSM again, and Sonu Sood, who has recently become one of the brightest stars in the face of humanity, will be a part of it. Now, this summit is going to transform your defense exam preparation onto a variety of aspects. With power-packed sessions, this 2-day summit is a must-attend for every defense aspirant, and to realize your goal in that direction, we have decided that you should be able to utilize it at best. So we have raised on to certain platforms, certain points जहाँ पे आप questions अपने highlight कर सकते हो. आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस से क्या क्वेश्चंस पूछना सबसे ज़्यादा ठीक रहेगा. विच डिग्निटरी वुड बी द बेस्ट टू आस्क विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. आई एक्सप्लेन टू यू सो दैट आप सही इंसान से सही क्वेश्चन का आंसर ले सको. Now, to realize your dream of joining the Indian Armed Forces and Paramilitary Forces, be a part of this summit, which is going to be organized between August 14th and 15th. Now, there are going to be 26 iconic speakers, 2 insightful days, 25 talks and panels, and 4 hands-on workshops. All of these things will be held in a short span of 48 hours, which means we'll have to do a lot of logistics on your behalf. हम बहुत कुछ करने वाले हैं यहाँ पे back to back so that you get the best advantage of everything that is available to you. Let me talk a little bit about the dignitaries that are there. Now, Shri M. Hamid Ansari is a former Vice President of India. जिन लोगों को इनके बारे में नहीं पता, he has also served in the diplomatic missions of India, which means he is the person to ask the questions related to external affairs of the country. Now, being a part of the military, you have to really know about how the world looks at India. India का perspective क्या है, पूरी दुनिया इंडिया को कैसे जानता है. इंडिया के बारे में समझने के लिए वो भी बाहर के perspective से he is going to be the right person. Thereafter, ऐसा नहीं है कि he only knows about the country from how it looks from outside. He also knows about things from inside because he has been the vice president and a prominent leader in one of the leading political parties of the country. So you would realize that he has the kind of insight that is required to build your perspective as an officer towards this one particular session. जहाँ पे आप जान सकते हो कि जब आप ऑफिसर बनोगे, what is to be expected from the foreign countries, what is to be expected from the country itself, and what is the role that you are expected to play in building the country. So अगर आपका कोई भी सवाल इस टाइप का होता है कि सर what is expected to be India's role in current India-China scuffle, or whatever is going to be the diplomatic I would say scuffling which is happening, all those questions can be directed to him and he will be the right person to answer those. Thereafter, there is another man, General VP Malik, who has been the former Chief of Indian Army. The name and the rank itself, the appointment in itself shows about the man that what is he. You can ask him any question regarding what is army, how it works, and what is expected to be the future of army. Now, I would seriously refrain you from asking any question कि सर रेजिमेंट में और बटालियन में क्या डिफरेंस होता है, या इस टाइप के सवाल मत पूछना. खुद सोचो, जब मतलब ये सवाल तो आपको वेबसाइट पे भी मिल सकते हैं ना. अगर आप कल को फॉर्मर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बन जाओ और कल को बच्चे आपसे ये पूछे कि सर रेजिमेंट और बटालियन में क्या डिफरेंस है, कैसा लगेगा? खुद सोचो.
मतलब तुम में से बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो दौड़ा दौड़ा के पीट दोगे. So don't ask such questions which you can find other places पे. Ask only questions which are relevant and will add value to your performance. Just for the sake of asking नहीं पूछना है. सवाल वो पूछो जो कहीं ना कहीं कुछ फायदा करे किसी का, तुम्हारा, दूसरे का, सबका फायदा होना चाहिए, राइट? अगले पॉइंट पे लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मिस्त्री इज गोइंग टू बी देयर, हु इज अ AVSM, SM and VSM. He has been the commandant of the NDA and colonel of the Maratha light infantry. So you should understand one simple thing about this man, that this man himself has trained the cadets first hand. फर्स्ट हैंड ट्रेनिंग इम्पार्ट करने में क्या चीज़ें इनकलकेट करनी होती हैं. अच्छा, एक चीज़ सोचना कभी सेलेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से, दे डोंट हैव टू ट्रेन द ऑफिसर्स, राइट? उनको कोई अधिकारियों को ट्रेनिंग तो देनी नहीं होती है, तो दे विल चूज ओनली दोज पीपल जो ट्रेनिंग करने वालों ने जैसे पैरामीटर्स बताए हों. अगर उन्होंने बोला है कि वी नीड ऑनेस्ट पीपल, तो दे विल बी रिक्रूटिंग ऑनेस्ट पीपल. इफ दे से दैट वी नीड पीपल विद अ ग्रिट, दे विल मेंशन दैट. सपोज करो सेलेक्टर्स को एक फीडबैक आता है नेशनल डिफेंस अकेडमी से दैट द प्रीवियस बैच इज लैकिंग इन इनिशिएटिव्स. So recommend people who have initiative as a skill imbibed in them. So they will recommend those people who are going to have that skill. So first question which I would suggest you to ask him is, sir, how does being a commandant, what are the qualities that you expect in a cadet are going to be? तो असली precise answer आपको कि क्या OLQs आपके अंदर होनी चाहिए हैं और क्या OLQs आपको डिस्प्ले करनी होती हैं यहीं पे मिलेगा. और कोई बंदा नहीं बता सकता पूरी दुनिया में. आई कैन टेल यू ओनली व्हाट आर द जनरल क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी शोन. एवरी सेलेक्टर कैन टेल यू दोज थिंग्स, बट दिस मैन इज द पर्सन टू आस्क फॉर कि सर क्या OLQs मुझे अपने अंदर डेवलप करनी है, बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन हु वॉज रिक्वायर्ड टू मेक श्योर दैट दोज वैल्यूज ग्रो इन योरसेल्फ. एज अ ऑफिसर वही तो करते हैं. यू हैव सर्टेन सेट ऑफ OLQs, दे ट्रेन यू फर्दर और तुम्हारे OLQs को अपग्रेड कराते हैं ये ले जाके. ठीक है, सो जो अपग्रेडेशन का पार्ट है ना, ये यहीं से आएगा. Ask him such questions. Also ask him brainstorming questions like, sir, what is the most difficult part which you face when you are training a cadet and when you are converting them into officers? What is the biggest problem, biggest challenge that you face? इस टाइप के questions पूछो ना. Why am I asking you to ask such questions? I'm asking you this because ये सवाल का जवाब कहीं नहीं मिलने वाला तुम्हें. कितनी बार ऐसा लाइफ में मौका आया है तुम्हारे पास कि तुम्हें किसी एक लेफ्टिनेंट जनरल से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछने को मिला हो कि सर व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस्ड, या फिर कुछ इस टाइप का सवाल जहां पे आपको ऐसा डीप इंसाइट मिले कि जब मुझे सेलेक्ट होना है तो व्हाट इज द कमांडेंट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी. बिकॉज एक बात याद रखना, कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर पूरा का पूरा सिस्टम चलता है फोर्सेस में. सिंपल सी बात है, द CEO ड्राइव्स द फोर्सेस, एंड इफ यू फील दैट द CEO ऑफ NDA, basically the commandant of the NDA, if you are asking him a question, he's telling you that this is what I am required of you, in that case you know what is to change in your own personality, what as a person you have to change in yourself. This is the right person to ask that question. We have various people who have walked into several aspects of life, including Lieutenant General HS Panag, PVSM, AVSM, and also he's a defense analyst. Then there is Miss Gul Panag. She's an actor, entrepreneur, and thought leader. उसके बाद में कैप्टन यशिका हतवाल त्यागी, who has been a Kargil war veteran, leadership trainer and a life coach. Now all these people have walked into different walks of life. You can ask them questions that seriously enthuse you. For example, to all the lady cadets or the lady candidates that are sitting over here, आप लोग को कभी कभी लाइफ में ऐसा लगता होगा कि यार सर मैं लड़की हूँ, ये कैसे चैलेंजेस फेस ऑफ होंगे. हमेशा कई बार आपको लगता होगा कि सर ये काफ़ी टफ एग्जाम है, वुड आई बी फिजिकली एबल टू मीट ऑल दोज चैलेंजेस. सी देयर इज अ लेडी राइट नेक्स्ट टू यू यहाँ पे, Captain Yashika Hatwal Tyagi, who has not only proven her mettle but also has served onto the field and has come back. Today she is training people to be better in their life. She is a life coach. So she herself has played the part which is required, and now she can tell you the insights. So ask them about their experiences. As a lady, you can ask these questions to them. And when you're talking about Lieutenant General HS Panag, I myself am an admirer of his knowledge. मैं भी कई बार इनके काफ़ी सारे वर्क्स को पढ़ता हूँ एंड मुझे भी काफ़ी डीप इंसाइट्स मिलती है, बिकॉज ही हैज स्पेंट अ करियर ऑन टू द ग्राउंड एंड ही नोज हाउ थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड. सो जितने भी लोगों को मेरे D&D क्लास के अंदर डाउट आता है कि सर वेदर इंडिया विल डू दिस, वेदर चाइना विल डू दिस, वेदर पाकिस्तान शुड डू दिस, डू वन थिंग. आपके पास पनाग साहब आ रहे हैं, ask him any questions that you want, because he's the defense analyst and he will be able to tell you the exact things that are happening on the ground. And trust me, even the government consults these people. The government does consult them before making a move forward. So you would know who's the right person to ask this question and who's not the right person to ask this question, right? इसके बाद में आते हैं एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार, PVSM, AVSM, VM, बार ADC. इनके बारे में मैं तुम्हें एक बात बताऊं. सबसे पहले तो ही इज़ अ फ्लाइंग पायलट, सो फ्लाइंग से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होते हैं, फील फ्री टू आस्क. ही हैज स्पेंट अ गुड अमाउंट ऑफ हिज लाइफ डूइंग दिस,
and you would find that definitely he is going to explain everything to you with the enthusiasm that I display. देखा है ना, जब मैं फ्लाइंग के बारे में बात करता हूँ कैसे मेरे खुद के पर निकल आते हैं, I start flying. You would also start getting the same things once you get recommended, and he has been in the service for so long. Now if you ask him about flying, I can assure you he would be more than happy to tell you about his experiences of how flying has been, how life in Air Force is challenging, and how is it different and difficult compared to the other services. एक comparison लेने के बारे में बात करी जाए तो. Apart from that, he will also be the correct person to explain all the doubts that you might have regarding growth in career, growth in services, and how exactly Air Force ka future is going to be. Because we are talking about 5th generation fighter aircrafts, we are talking about multi-dimensional approaches of the Air Force. Recently, we have also seen the inculcation of Garud commandos, and all of these things are very new to this atmosphere. You would find that he's the right person to explain to you every single thing, because he's still serving and he's serving onto a very top position. So that is one thing about him. Next point is Major D.P. Singh, who is a war veteran and Indian blade runner. I believe that you must be aware about him, and he needs no introduction because the never giving up attitude comes from this man. If दुनिया में कोई इंसान दिखाता है कि हाँ कितना भी बड़ी चुनौती आ जाए तुम्हारी ज़िंदगी में, छोटी छोटी चीज़ों से जिनसे तुम डिप्रेस हो जाते हो, they play not even a futile role in your life, तो it is this man. Just look at him, what has he done, इनके लाइफ के बारे में पढ़ो, इनके बारे में जानो, and ask him questions कि सर जब लाइफ में सबसे डीमोटिवेटिंग पॉइंट पे होते हैं तो हाउ टू फाइट बैक. लर्न फ्रॉम हिम, आस्क हिम क्वेश्चंस दैट सीरियसली एंथूज यू थ्रू आउट द नाइट. पूरी रात जो तुम्हें जगा के रखते हैं वो सवाल इनसे पूछो कि सर व्हाट इज वन फैक्टर दैट कीप्स यू अलाइव एवरी सिंगल डे, दैट ग्रांट्स यू द एनर्जी टू फाइट बैक हार्डर देन द लास्ट डे दैट यू हैव लेफ्ट. व्हाट इज दैट वन फैक्टर दैट कीप्स यू मोटिवेटेड एंड कीप्स यू ड्राइविंग. आस्क हिम क्वेश्चंस एंड ट्रस्ट मी, आप इनसे जो चीज़ें जानेंगे वो कोई और इंसान नहीं बता सकता, बिकॉज लाइफ एक्सपीरियंस इज व्हाट गिव्स यू द नॉलेज दैट नोबडी एल्स कैन ग्रांट यू. No matter how much knowledge I have, no matter how many books have I read, I will not be able to grant you questions. I will not be able to answer your, let's say, life skills based questions. जब तक end of the day आप खुद से उन चीज़ों से connected feel नहीं कर पा रहे हो. और मैं वो connection तभी build करवा पाऊंगा जब मेरे पास खुद real ground life experience हो. इसी हिसाब से आप जान पाओगे. Now this summit is happening again online, so online बैठ के देखने में कोई बड़ी बात नहीं है. आप जैसे क्लासेस देखते हो, सिंपल सी बात है, उसी हिसाब से देख लेना आप यहाँ पे. नेक्स्ट पॉइंट इज लेफ्टिनेंट जनरल विनोद वशिष्ठ, AVSM, VSM and BA, former commandant of OTA, former DG, National Cadet Corps. I believe again the name says a lot about him. You know what to ask him. You know how he has played an active role in the military movements that have happened in the recent past, how he has actively played a role in deployment of the services, and he has played an active role in collaboration of activities between the three forces. And that's where you can ask him questions ki sir, what is exactly happening over here. Now there is one point, I've met Vinod sir personally, and what a personality he holds, down to earth, friendly and sweet. Ask him anything, he'll clear it. Definitely he's one such person who is very close to the ground. And एक चीज़ मैंने देखी है, द हायर यू ग्रो इन रैंक्स, दुनिया जहान के लिए आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये घमंडी इंसान है, इस टाइप का, ही इज़ अ वेरी हाई डिग्निटरी ऑफिसर. बट ट्रस्ट मी, आई फेल्ट मोस्ट कंफर्टेबल विद द कमांडेंट ऑफ माई अकेडमी, हु वाज देन ऑल्सो एन एयर मार्शल. ठीक है, आई फेल्ट मोस्ट कंफर्टेबल ओवर देयर. मेरे को तब जाके इतना कंफर्ट उनके साथ में आता था. एंड सोचो, सामने से एक स्क्वाड लीडर अगर आ जाते थे कोई भी, तो हालत खराब हो जाती थी. But with the air commandant, with my commandant of the academy, I was very comfortable. I was very happy. उनके साथ खड़े होके खाना तक खाया in the dinner nights. Like seriously हम लोग बात कर रहे थे. He was telling me about his Afghan experience, and I was asking him questions. फिर कैसे किया आपने? What happened in thereafter? That's the kind of jello of which you feel. ये senior officers देखने में कितने भी ज़्यादा खतरनाक लगते हो, but they are humble and human at heart. They are looking at you like they're children, because tomorrow you will be the part of the forces. You will be sitting on the seats that they have created for you, and you will be the ones taking charge from them. So they seriously consider you as the future officers. Keep that thing in your mind whenever you are asking them questions, and those questions thereafter will automatically come with high quality. अगले नंबर पे Mr. Sonu Sood is there. Obviously he has proven his mettle in terms of humanity when comes this corona crisis and everything. He has been providing food and everything to people who really needed it. And thereafter he has shown that humanity isn't dead. So ask him questions कि see, first of all इनका कोई background नहीं था, बिना किसी background के आज आके इस पद पे खड़े हुए हैं, ये इतनी ऊंची personality बन गए हैं आज के तारीख में. You should understand that man deserves honor, and that man can answer your questions when it comes to struggling. Ask him about the struggle. तुमको लगता है कि शायद तुम्हारे खुद के लाइफ में इतने struggles हैं, खुद से देखना इन लोगों के लाइफ के struggles कितने रहे हैं. And trust me, वही है ना, एक कि आप अपने तरफ देखते हो तो लगता है कि सारे के सारे दुख आपकी ज़िंदगी में, बट जैसे ही आप बाहर जाके देखते हो तो पता लगता है कि अपना गम तो कुछ था ही नहीं.
सारा दुनिया का ही है, और फिर आप दूसरे के दुखों को दूर करके खुशी पाने में ही अपने आप को अच्छा मानने लगते हो. Now the link has recently again been shared in the chat. Those of you who have not shared, those of you who have not registered for this can immediately go ahead and register themselves for the summit. Do not miss this opportunity. It's a golden opportunity and maybe a once in lifetime kind of opportunity for you. Because हो सकता है कि यहाँ से एक सवाल आपको ऐसा मिल जाए, एक सवाल ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से आप रिकमेंड हो जाओ, जो आपका यक्ष प्रश्न बना बैठा था इतने वर्षों से आपके जीवन में. Now Saket is saying खतरनाक नहीं लगते, it's just discipline looks over their face. Exactly. And discipline is not making them dangerous, it's only making them more friendly, because with discipline you get everything in the adequate amount of time. ठीक है, OTA चेन्नई कैरेट गेट PC और नॉट, सबको PC मिल जाता है डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस. आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपको PC मिल जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज रणविजय सिंह सिंघा, एंड आई बिलीव आप लोगों ने इनके काफी शोज देखे होंगे जहां पे ही इज वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स द फोर्सेस. ये फोर्सेस की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड रहे हैं. और अगेन दिस मैन ऑल्सो, अगर कभी पढ़ना इनका स्ट्रगल, बिकॉज ये स्टंट्स वगैरह बहुत करते थे, तो स्टंट्स के टाइम पे काफी बोन फ्रैक्चर एंड एवरीथिंग हैज हैपेंड टू हिम, स्टिल नेवर गिविंग अप एटीट्यूड कम्स फ्रॉम दिस मैन. यू वुड फाइंड दैट इनके अंदर से भी एक नेवर गिविंग अप वाला एटीट्यूड आता रहता है बैक टू बैक, एंड यू विल फाइंड that yes, he himself shows that no matter what happens, if it is your passion, if it looks crazy to people, let them think it is crazy. You keep doing whatever your passion is. अपने passion की तरफ लगातार कदम बाई कदम बढ़ते रहो. Then Mr. Shyamal Vallabhji, who is a sports scientist and EQ consultant, he is there for your answers regarding how you develop fitness. कोई भी चीज़ पूछनी हो इससे रिलेटेड कि आपको कैसे फिटनेस बनानी है अपनी, किस तरीके से आपको अपने आप को जॉली अप रखना है, एकदम खुश रखना है. क्योंकि देखो, दिस इज वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड, दैट जब तक आप फिजिकली एक्टिव रहते हो, फिट रहते हो, टिल दैट टाइम यू कीप गेटिंग द हैप्पी वाइब्स. जिस दिन दौड़ लेते हो अपने, सुबह को अच्छा लगता है, पूरा दिन हल्का फील होता है, यू कीप फीलिंग बेटर ओवर हियर. ठीक है, सो एक सिंपल सी बात है, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड, आस्क हिम क्वेश्चंस दैट अदरवाइज यू वुडंट फाइंड एन आंसर टू, बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट एंड ही इज एन एक्सपर्ट इनटू स्पोर्ट्स साइंटिस्ट. ठीक है, सो सोच के रखना कि किस तरीके से उनको डिटेल्ड एंड थॉरो नॉलेज होगा. वट एवर क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आस्क हिम, ही इज गोइंग टू गिव यू एन आंसर विच यू वुडंट हैव एक्सपेक्टेड. आई प्रॉमिस यू दैट. ठीक है, एक्सपेक्टेड आंसर नहीं होगा, कुछ और ही आने वाला है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. देन देयर इज Commodore Anil Jai Singh. He is the Vice President of Indian Maritime Foundation. That him itself ensures that he has thorough knowledge about the depth of the seas. आज सुना होगा ना, इंडो पैसिफिक, डेप्थ ऑफ द ओशंस, अंडमान एंड निकोबार ट्राइब बना हम लोग यहाँ पे, सॉरी, ये ट्राई सर्विसेज कमांड को एस्टैब्लिश किया है. देयर आर क्वेश्चंस व्हिच यू रियली वांट टू नो बट यू आर नेवर एबल टू आस्क, स्पेशली व्हेन इट इज सेड दैट सबमरीन्स के बारे में बहुत डाउट होते हैं बच्चों के. सबमरीन्स को लेके इतने डाउट्स होते हैं कि आप पूछते हो और कुछ पता ही नहीं है किसी को. पब्लिकली आप बाहर जाओगे, कहीं भी पढ़ोगे इसके बारे में, तो यू विल गेट ओनली द स्केची इन्फॉर्मेशन दैट दिस इज अ न्यूक्लियर सबमरीन, इसके अंदर ये होता है, वो होता है. एंड इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, अगर कई बार मुझसे भी तुम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हो तो मैं भी रिफ्रेन करता हूँ बताने से, बिकॉज देर आर सर्टेन थिंग्स विच यू रियली डू नॉट वांट टू ओपन आउट एंड डिलीवर इट इन द पब्लिक. नाउ ही इज सिटिंग ऑन टू अ प्लेटफॉर्म वेयरइन ही हैज बीन आंसरिंग सच क्वेश्चंस फॉर मोर देन 25 years, and you would realize that yes, he is the right person because he knows where to stop. He will be able to give you whatever you want to know into a concise and correct format that would not be detrimental also. So ask him the questions about Navy, because Navy is the lesser known forces but the bigger forces that has, I would seriously say Navy has a lot of things undercover. Under the water, Navy is huge. You just do not know. Whenever you're talking about Navy, it's clearly the tip of the iceberg. Everything else remains frozen under the ice, and you can ask him any questions that you want to. This is one thing I have realized from my experience, because I have variety of friends. मेरे NDA का पूरा कोर्स इस टाइम पे officers हैं, some of them are Marcos also. Even they don't know many things about Navy. That is the circumstance. At least in Air Force we get to know a lot about our service. Navy is one service जिसके बारे में जानना है तो तुम्हें कमाना पड़ता है उसे. So keep कमाओ फाइंग those things. In my terminology जो फाइंग वाली होती है. Then there is Major Neeti CJ. She is a retired army veteran, and again, for the ladies, for the girls, this is going to be your opportunity to ask about the operational challenges that as a youngster you might face into the army. As a youngster, you might see that army is seriously dwelling into a new platform wherein things are changing every single day. We have seen that permanent commission has now been granted to girls, but there are certain apprehensions which still loom in your mind कि sir discrimination होता है क्या, ऐसी चीज़ें होती हैं, वैसी चीज़ें होती हैं. She has climbed up to the rank of the major and she knows how things happen in the current context in the army. So ask her questions that you can, because she will be the one who will be able to relate to the current scenario and thereafter answer your queries. So ask her all those things. Now the best thing you can find over here is that we have people coming from all the spheres, from diplomacy, from politics, from let's say Bollywood, from Army, Air Force, Navy, and then again we have people who are already with our platform. Before we go even there, let's talk about Sanjeev Krishnan Sood, who's
former ADG बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस. सो ये आप लोगों में से कई लोगों को शायद नहीं पता होगा कि पीस टाइम में और वॉर टाइम में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैनिंग द बॉर्डर्स. ठीक है, बॉर्डर्स को मैन करने में थोड़ा सा एक डिफरेंस रहता है. सो जनरली BSF वगैरह जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस दे मैन द बॉर्डर, बट इन वॉर टाइम आर्मी टेक्स ओवर. सो यू कैन आस्क हिम अबाउट हाउ एग्जैक्टली थिंग्स वर्क व्हेन इट इज अ पीस टाइम सिनेरियो. कैसे दुनिया चलती है, किस टाइप की हम लोग फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ आर्मी व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ पीस टाइम सिचुएशन इज हैपनिंग. इसके बाद में अगर आप आगे बढ़ोगे तो वी हैव टू पीपल, अक्षय पानगारीकर एंड चिराग गर्ग, हु आर पार्ट ऑफ द CAPF, और इन लोगों ने टॉप रैंक्स के अंदर इस एग्जाम को क्वालिफाई किया इन 2017 एंड 18. अब क्वेश्चंस आते हैं अच्छे वाले, इनसे आप पूछिए कि सर हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट वी एज अ स्टूडेंट शुड प्रोसीड. इन लोगों ने अपने टाइम पे दे हैव बीन हियर, दे हैव डन दैट. तुम में से कई लोगों का गोल होगा राइट कि तुम्हें फर्स्ट रैंक पे निकालना है, पहली बार में निकालना है या नहीं. चैट में बताओ मुझे फटाफट. डू यू हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग इनसाइड दैट यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम इन वन गो विद टॉप रैंक. है ना, एक अंदर से जील आती है, एक एंथुसियाज्म आता है अंदर से. Now when you have that kind of zeal and enthusiasm, ask these people, so what was the strategy you followed, what were the resources that you would suggest. And I can assure you that there is going to be one common statement that they will make: limit your resources, keep moving forward. अपने resources को limited रख के आप आगे बढ़ते रहो, and ultimately you would find that you are winning significantly. So keep that idea in the mind. Then Colonel Bhupender Singh Rehal, Group Captain Rajesh Pandey, Air Commodore Vikas Parnaik, प्रशांत जगताप जी, दिव्या मैम, संजय सर, मैं, अर्पित सर, विशाल सर, ये सारे लोग भी इसी प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाते हैं. एंड आई बिलीव इन सब के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल कर्नल भूपेंद्र सिंह रेहाल एंड ग्रुप कैप्टन राजेश पांडे हैव ऑलरेडी सर्व दिस मदरलैंड. देन एयर कमोडोर विकास परनायक जी भी हमारे सर्विसेज के पार्ट थे. ही हैज़ ऑल्सो सर्व द फोर्सेज, and you can get a great insight from them. They will be sharing their experiences, their stories on how exactly you can prepare for the forces. All of those things are made available to you यहाँ पे. उसके बाद में प्रशांत सर हैं हमारे पास, प्रशांत जगताप सर, दिव्या मैम हैं, संजय सर हैं. इन लोगों ने भी अपने टाइम पे सर्विसेज को अपना टाइम दिया हुआ है, वैल्यू डिवोट करी हुई है. दे हैव ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम द सर्विसेज एंड दे कैन प्रोवाइड यू विद इमेंस नॉलेज. Then I am there. I've been a part of the Air Force as an officer cadet, and trust me, my experience, though it might be very short, but it has been very long because of the exposure to the NDA as well as the CDS. In the meanwhile, I've been in the kind of fling with the forces, so I can tell you a lot. There are stories which I have told in the class, and I'm sure जो लोग मुझसे regular classes लेते हैं, they must be smiling at this point of time because they know the stories that I've told them. The serious one, the mischievous ones, the every kind of stories that we have to share with you. Thereafter, Arpit sir and Vishal sir अपने areas में top educators, and you know that they know a lot. So especially I would suggest you to go forward with all these people. सबसे कुछ पूछो, अच्छे सवाल पूछो. Although educators से तुम्हें पता है कैसे बात करनी है, because we people are there to give you an insight over the long edge. अगर हम लोगों से सवाल पूछ रहे हो तो ask us the questions which you wouldn't be asking in class. क्लास के बाहर के क्वेश्चंस कुछ पूछना समिट के टाइम पे. जैसे मैं जब क्लास लूंगा, आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एफकैट एग्जामिनेशन. सो एफकैट एग्जामिनेशन के बारे में जो भी डाउट्स आते हैं, जनरल क्वेरीज की सर इसके बाद क्या, उसके बाद क्या, कंपैरिजन क्या होता है ऑफिसर्स में, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेना, रादर देन आस्किंग द सेम डाउट्स की सर इकोनॉमी की क्लास कब है अगली, एसएसबी की क्लास कब है अगली. ये शेड्यूल वाले क्वेश्चंस मत पूछना. That also brings me to the other educators and other people who are coming onto the platform. See, these are the people who are coming from the various walks of life, and they have given their adequate time to the services, and they have come here because they have some sort of attitude of giving it back to the society. वो तुम्हें एक path दिखाने आए हैं. वहाँ पे कुछ ऐसा मत करना कि उनको अच्छा ना लगे. Do not ask a stupid question that would simply be inflammatory against a particular community या किसी एक जेंडर के खिलाफ हो. इस टाइप के सवालों को कोशिश करना ना पूछो. कोशिश क्या मत ही पूछना. That's what I would recommend, because you yourself are about to become an officer. तुम खुद से एक ऑफिसर बनने वाले हो, और ऑफिसर बनने के बाद में इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू विल बी द बेस्ट बिहेवियर वाला गाय. वाई? बिकॉज यू बिकम अ मोटिवेटिंग लाइट. जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उससे पहले कई लोग जानते थे मुझे, बट जिस दिन मैं सेलेक्ट हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम एनडीए में, मेरे स्कूल में मुझे बुलाया गया था, एंड आफ्टर द सेशन वॉज ओवर ऑलमोस्ट 60 to 80 बॉयज केम टू मी सेइंग कि सर वी वॉन्ट टू ज्वाइन द फोर्सेज, व्हाट डिड यू डू. सो उसी टाइम पे सोचो, जब मैं खुद बच्चा होता था स्कूल के तुरंत बाहर का, मेरे से 60 से 80 बच्चों ने पूछा ऐसा, तो मुझे क्या फीलिंग आई होगी. आई गॉट द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वॉज देयर कि यार आई हैव टू बी अ रोल मॉडल फॉर देम बिकॉज दे आर फॉलोइंग इन माई पाथ. अब मैंने फेसबुक पे जो भी कर रहा होता हूँ कांड वांड, तो सोच के करने पड़ते थे उसके बाद में, समझ रहे हो. मतलब वो बचपन में तो हम सब ने करी हैं कुछ हरकतें, बाद में हम सबको थोड़ा संभलना पड़ता है यहाँ पे. सो एक सिंपल सी बात आप याद रखना, दैट एनी टाइम
you are becoming a role model to people. People will follow in your footsteps. So whatever you're doing should be controlled, should be regulated, and should be officer-like. Be a guiding light. Do not become a shadow. Okay? So हमेशा याद रखना. और हाँ, एक और बात, फोर्सेस के बारे में एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहूँगा. वर्क हार्ड, प्ले हार्डर. वर्क हार्ड एंड प्ले हार्डर. ठीक है? सिर्फ खेल भी नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई भी नहीं करनी है. लाइफ शुड नॉट गेट मोनोटोनस. इन दिस डिफेंस समिट विल बी श्योर that you will learn that value also. Now there is a question इस समिट में, आप उस क्वेश्चन का आंसर दोगे, why you left IAF. पर्सनल रीजंस ही बोलूंगा और क्या बोलूंगा. बाकी रिकमेंड हो जाओगे तो फिर असली आंसर भी ले लेना, डेप्थ वाला, इन डिटेल. अदरवाइज तो पर्सनल रीजंस ही थे, क्या ही बता सकता हूँ मैं, राइट? So take the advantage of the summit and be a part of this India's biggest defense summit that is being organized for you by Unacademy at the delivery of your home. You don't have to walk out of the comfort of your home. In fact, तुम रज़ाई में लेट के भी देख सकते हो if you really are interested. So keep taking the advantage, be a part of the summit, and if you have any questions, so please ask. ठीक है? अभी कोई questions है तो पूछ लो. Otherwise, I believe the summit, ये जो introduction session था, this is over. So ask any questions you have. बिकॉज एक और चीज़, मैंने ये लाइन बोली, इसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 10-15 सेकेंड्स का डिले रहेगा यहाँ पे. सो इफ़ यू आर आस्किंग क्वेश्चन, गिव मी 10-15 सेकेंड्स टू आंसर दैट. स्टोरीज तो बनता है ना सर IAF अकेडमी की. अकेडमी के साथ साथ आई विल ब्रिंग स्टोरीज टू यू फ्रॉम द एयरफोर्स ऑल्सो. ठीक है? आसपास की स्टोरीज भी थोड़ी ले आऊँगा. आई विल ट्राई टू सी कितना क्वेश्चन हो जाए. ठीक है? मैक्सिमम क्वेश्चन आई विल ट्राई टू कवर अप एंड स्टोरीज ऑल्सो. गर्मी में रज़ाई, हाँ, देयर आर पीपल हु स्टे इनसाइड एयर कंडीशन रूम. 16 डिग्री चला के उसके बाद में रज़ाई में बैठते हैं, 16 डिग्रीज पे रज़ाई. ओके, ठीक है. अगर आई बिलीव अगर कोई क्वेश्चंस नहीं होता है आप लोगों का तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस एनी टाइम इन द ग्रुप में पूछ लेना, कोई इशू नहीं है. विल सी टैकल दीज थिंग्स इनटू द ग्रुप ऑल्सो. ठीक है? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आई बिलीव द लिंक ऑल्सो हैज बीन शेयर्ड इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. सो जिन लोगों ने अभी तक समिट के लिए रजिस्टर नहीं किया है, द लिंक इज जस्ट देयर इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज फील फ्री टू जॉइन इट, रजिस्टर इट, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू देयर. Gaurav Arya sir is not coming, unfortunately. So we'll try to see if we can bring him along some other day. But there are various other speakers, and you would really be, I would say, happy to see them speak. I'm sure you'll enjoy it. LMG वाली, ठीक है, I'll bring that also. ठीक है? दीक्षा, मोटिवेशन को मेंटेन कैसे रखना है? वो ख्वाब ही क्या है जो सोने दे तुम्हें. उस ख्वाब को, मतलब जो सोने के बाद आते हैं ना, वो ख्वाब नहीं होते. Those are just the whims and fancies of people. Keep a dream that keeps you awake. Keep a dream that keeps you motivated. मेरे साथ होता है ना, सो रहा होता हूँ, एकदम से उठ जाता हूँ रात के 2 बजे भी कि नहीं यार काम करना है. I sit back and start working hard. Keep that kind of motivation. Anytime you get the feeling, don't wait for motivation. Simply start working immediately. श्यामल से स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछ लें. हाँ, पूछ सकते हो, बिल्कुल. Ask him. अगला पॉइंट है, मैं अकेडमी की स्टोरी सुननी है आपकी हमको. बिल्कुल, प्लीज़. हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस इन रूटीन लाइफ. होल डे क्लासेस के साथ पर्सनल लाइफ जीरो हो जाती है. आई वुड सजेस्ट गिव ओनली 8 to 10 आवर्स टू दीज ऑनलाइन क्लासेस, नॉट मोर देन दैट. एटलीस्ट 2 आवर्स खुद के लिए संभाल के रखो अपने. 2 घंटे हर दिन आपको अपने लिए देने हैं, अदरवाइज जिंदगी बोरिंग हो जाएगी. Why aren't you coming up with CAPF paper 2 course? It's in the pipeline, but once I get my schedule a little bit light, we'll bring it. ठीक है? And ऐसा नहीं है I'm not bringing it up. It's that I don't get the time these days. समय नहीं मिलता है. आज बोली देते एक सुनी थी क्या. चलो, apart from that, any other questions if there are, please ask in the group or during the class. Take care. Jai Hind.